Good morning, class. Today we are going to continue the same lecture that was the preposition yesterday, and we would carry forward the same lecture. Okay, so this is the fourth or the fifth part of the speech we are going on. We have already done the noun, pronoun, adjective, adverb, and there's the kind of the fifth preposition, that is preposition. Okay, today we are going to study the preposition. So what is the difference between the preposition and adverb? Yesterday we were reading about it. Don't loiter about the street. Here the about follows the street. Okay, I came the day before yesterday. So here the preposition is before, and surely take it would surely take an object. Yesterday is object here. I don't loiter. Loiter का मतलब है घूमो, घूमना. जो जो लूटने से पहले जो देख रेकी करता है, means surrounding of the area, he sees that what is going on here, that is known as loiter. Okay, is he in his room? Is not room in his room. So in is the preposition. So his room is here and used as an object. Used as an object, sir. Used as an object. The driver jumped off the car. So jumped is the verb. Off is the preposition. Off is the preposition. Okay. So off is the preposition. There is the I have told you already about the off and off. That what is the difference between both of the off? कि दोनों ऑफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है? The book lies on the table and on is what? On is the preposition. अब देखो यहाँ पे बुक क्या है? एक नाउन है. टेबल क्या है? एक नाउन है. और ऑन क्या है? ऑन इज ए प्रीपोजिशन. तो किससे फॉलो हुई? ऑब्जेक्ट से फॉलो हुई सर. किससे? ऑब्जेक्ट से फॉलो हुई. ओके. आफ्टर ए मंथ ही रिटर्न. आफ्टर ए मंथ, आफ्टर खुद प्रीपोजिशन है. क्या है? आफ्टर खुद प्रीपोजिशन. आफ्टर खुद प्रीपोजिशन. आफ्टर ए मंथ ही रिटर्न. He rules over a vast empire. Over is a preposition. Over is a preposition. A vast empire. I have not slept since yesterday. अब since क्या है? Preposition. Because yesterday is a noun, means an object followed by a preposition. पहली क्लास की पहली लाइन याद करो, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा. Since के बाद में क्या आता है? Yesterday. Now. Okay, next, move to the next chapter, and that is exercise. Name the preposition, the following sentences, and tell the word which each governs. कल इसी पे बात चल रही थी कि some sentences are from the poetry, and they are used in the preposition, in the form of the preposition, as well as they are coming in the forthcoming examinations, and has come in various kind of the examinations that has been taken place during the last calendar years. Okay, so the first sentence is the little J corner sat in a corner. So अब देखो ये क्या है? रिदम सेट कर रहा है. लिटिल जे कॉर्नर सेट इन ए कॉर्नर. पोइम से उठाया गया ना, तो सेट ऑन ए कॉर्नर नहीं आएगा. जैसे प्रीपोजिशन राइटर यूज कर गया वैसी ही प्रीपोजिशन रहेगी. कुछ भी अलग नहीं होगा. ओके, सब कुछ वैसा ही रहेगा. ओल्ड मदर हबार्ड सी वेंट टू द कबार्ड. सी वेंट टू द कबार्ड. टू क्या है सर? प्रीपोजिशन. ओल्ड मदर हबार्ड सी वेंट टू द कबार्ड. ये है क्या? चल क्या रहा है? मतलब पोएट्री चल रही है. बट यहाँ पे वेंट टू द कबार्ड. कबार्ड मतलब क्या है? टू किसके लिए आती है? टू आती है प्लेस के लिए. सिंपल सोचो ना कि ही वेंट टू द मार्केट. सी वेंट टू द मार्केट. लड़की है वो मार्केट गई. सी ही वेंट टू द मार्केट. तो वेंट टू द मार्केट क्यों आया? टू मार्केट क्यों आया? बिकॉज टू इज ए प्लेस. टू इज ए प्लेस. सिंपली हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल. हमटी डमटी वॉल पे बैठे. लाइन एंड यूनिकॉर्न फॉट फॉर द कॉर्न. लाइन और यूनिकॉर्न किसके लिए लड़े? फॉर द क्राउन. फॉर द क्राउन. वी विल लिव इन की रन्स थ्रू द टाउन. वी विल लिव इन की कहाँ?
runs through the town. We will living की कहाँ घूमे? तो through the town. Okay. She sat by the fire and told me again. वो आग के पास बैठ गई, फिर उसने मुझे कहानी बताई. She sat by the fire and told. By का मतलब क्या होता है? Beside. By का मतलब क्या होता है? Beside. Beside मतलब बगल में, पास में, बगल में, पास में. Rain, rain, go to Spain and never come back again. Rain, rain, go to Spain and rain, rain कहाँ पे जा रही है? Spain and never come back again. A fair little girl sat under a fire. कहाँ बैठी? Under a fire. Under a tree. Fair little girl sat under a tree. तो वो कहाँ पे बैठ गई? Under a tree. Such a number of rocks came over her head. तो वो such a number of rocks came over her head. किसके हेड पे? उसके हेड पे. जॉन गिल्पिन वाज a citizen of credit and renown. अब ये प्रोज है, इस बार पोएट्री नहीं. मतलब कई बार जैसे मैं बोलूं प्रोज और पोएट्री में फर्क क्या होता है दोस्तों, पहले तो ये जान. जो भी लिटरेचर से नहीं है शायद उनको समझ नहीं है प्रोज और पोएट्री क्या होती है. पोएट्री तो आपको सबको पता है कि पोएट्री क्या होती है, कविता. और प्रोज क्या होता है? गद्यांश, लेखन. जॉन गिल्पिन वाज ए सिटीजन ऑफ क्रेडिट एंड रिनोन. जॉन गिल्पिन क्या था? एक सिटीजन था क्रेडिट और रिनोन का. विल यू वॉक इनटू माय पार्लर. ये फिर वापस पोइट्री से कि स्पाइडर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, विल यू वॉक इनटू माय पार्लर. अब देखो पार्लर होता क्या है. मकड़ी का जाला. अब वो क्या बोल रहे हैं? विल यू वॉक इनटू माय पार्लर. इनटू मतलब एक बार अगर मक्खी आ गई तो वापस जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी. तो ऐसा मौसम जो इतना अंदर हो जाए कि वापस आना मुश्किल हो. जैसे ही जम्प इनटू द रिवर. सुसाइड करने के लिए कोई कूदे, ही जम्प इनटू द रिवर. इन द रिवर नहीं आता है. इनटू व्हाई? बिकॉज़ द बाय मोशन ही विल फ्लाई अंडर, अंडरवेयर, अंडरगो दे, अंडर इट. ओके. तो वो यहाँ पे आएगा स्पाइडर टू द फ्लाई. टू द फ्लाई. तो यहाँ पे क्या आएगा? टू. इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप. इनटू द स्ट्रीट. स्ट्रीट के अंदर पाइपर बजा रहा था. पाइपर पी 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 करता रहता ना, बजाता रहता ना, दैट इज नोन एज पाइपर. आई कैन नेवर रिटर्न विथ एनी पुअर ट्रेन. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा he worked and sung from noon till night. समय के लिए आता है. नून आएगा. from noon till night. He worked and sang from noon till night. I can never return my poor dog track. They all ran after the farmer's wife who out of their trails with the carving knife. He, they all ran after the farmer's wife who cut off their tails with a carving knife. तो वो सारे लोग फार्मर की वाइफ के पीछे थे. वो कट ऑफ देयर टेल्स विद ए कार्विंग नाइफ. तो क्या रिदम आ रहा है क्या? देखो रेन आफ्टर इज ए प्रीपोजिशन. व्हाई? बिकॉज फार्मर वाइफ इज ए ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय इट. वो कट ऑफ देयर. ऑफ इज देयर विद. ये सब क्या है? प्रीपोजिशन. कि वो सारे फार्मर वाइफ के पीछे चल रहे थे. उन्होंने उसने टेल ही काट दी विद ए कार्विंग नाइफ. जो पीछे रस्सी पकड़ के चल रहे थे उसने काट दी. तो
क्या रिदम आ रही है? एज ए पोइम। सो पोइम की प्रीपोजिशन जैसी पोइट ने यूज कर दी। सपोज शेक्सपियर इज देयर, सपोज जेके रोलिंग इज देयर, सपोज जॉन कीट्स इज देयर, सपोज विलियम वर्ड्सवर्थ इज देयर, सेल्ज़ार की कोई भी हो, however they have used the preposition, the answer would be accordingly. One day the boy his breakfast took and ate it by purling brook, which through his mother's orchard ran. One day the boy his breakfast took, कि कुछ बॉय है वो ब्रेकफास्ट लिया उसने, एंड एट इट बाय ए पर्लिंग ब्रूक, और बाद में झरने से, तो इज मदर्स और कार्ड झरने के बाद में उसने, ब्रूक इज लाइक एन स्ट्रीम, ओके, इट्स लाइक एन स्ट्रीम. Old John with the white hair does laugh awake here, sitting under the oak among the old folk. तो यहाँ अंडर द ओक आएगा, ऑन द ओक नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है. अमंग द ओल्ड फोक, तो अमंग इज द प्रीपोजिशन है. सो पोएट्री की प्रीपोजिशन एज इट इज हमें लिख के आनी है. कुछ 18 या 20 सेंटेंस है, उनको याद कर लेना, जनरली वो आ जाते हैं एग्जाम में. जैसे अब ऐसा आ गया, ओल्ड जॉन विथ वाइट हेयर डज लाफ अवेक हेयर, सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिटिंग ऑन द ओक नहीं आएगा, जबकि ऐसा हो सकता है कि ट्री के ऊपर बैठा हूँ, सिटिंग ओवर द ओक, उसके ऊपर चल रहा हूँ, एट द ओक अमंग द ओल्ड फोक. तो ऐसी प्रीपोजिशन आ सकती है. ओल्ड जॉन विथ वाइट हेयर डज लाफ अवेक हेयर, सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक. फिर राइज विद द मॉर्निंग लाफ. मॉर्निंग चहचहाट के साथ जगते हैं, जो चिड़ियों की चहचहाट होती, चिड़िया क्या करती है? चिरपिंग, उसके साथ जगते हैं गोधुली बेला के साथ, ठीक है. बट they labor till almost dark. Till almost dark is a time. is a time. टाइम के लिए क्या आता है? either till और until. क्या आता है? either till और until. और उसके बाद में rise with the morning lark. यहाँ पे क्या आता है? with. by the nine goats is what. नौ भगवानों की कसम खाई उसने. कई बार होता है आदमी झूठा होता है तो वो कसमें खाता है, मैं इस भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, मैं इस भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, आई एम द राइटफुल कैंडिडेट, मैं ही सच्चा हूँ. सो वेन एवर द पर्सन इज स्वेरिंग मीन्स ही इज लायर, झूठा है वो. ओके, कसम वो ही खाता है तो झूठा होता है. बाय द नाइन गॉड्स इज वन. अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिटी स्टैंड. अंडर ए स्प्रेडिंग, अब देखो चेस्टनट ट्री बड़ा ट्री होता है, बहुत बड़ा ट्री, तो उसके नीचे क्या रह सकते हैं? ठीक है, तो उसके नीचे, तो इसलिए क्या आया? अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री. समझ लो कि हमारा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें लटकी हुई है, तो चेस्टनट ट्री फॉरेन का ट्री है. द विलेज स्मिटी, तो विलेज के लोग, विलेज की स्मिटी है वो वहां स्टे करती है. तो हम यहाँ प्रीपोजिशन कौन है? अंडर. He goes on Sunday to the church. देखो कोई भी प्लेस के लिए क्या आता है? एंड सिट्स अमंग हिज बॉय. बॉयज काफी है इसलिए अमंग. देखो अमंग और बिटवीन में फर्क क्या है? अमंग कई लोगों के लिए आता है दोस्तों. फॉर द मेनी थिंग्स मेनी पीपल द वर्ड यूज वुड बी द अमंग. और अगर यही चीज दो लोगों के लिए हो देन इट वुड बी द बिटवीन. अब क्या होगा? बिटवीन होगा मेरे दोस्तों. हर आर्म्स एक और हर ब्रेस्ट से ले. उसकी आर्म्स कहाँ थी? उसके ब्रेस्ट. हर आर्म्स अक्रॉस हर ब्रेस्ट थी ले. उसके आर्म्स कहाँ थी? ऑन हर ब्रेस्ट नहीं हो सकता, अक्रॉस हर ब्रेस्ट. हर आर्म्स अक्रॉस हर ब्रेस्ट सी लेग. माइन बी ए कोट बिसाइड द हिल. माइन बी ए कोट बिसाइड द हिल, कि मेरा एक कोट होगा, घर होगा, बिसाइड द हिल. कहाँ पे? बाय द साइड ऑफ द हिल. बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ द हिल. Around my ivied port sail spring each pregnant flower that drinks the dew. Around my ivied port sail spring each fragrant flower that drinks the dew. कि मेरा पोर्च है, पोर्च मतलब बरामदा,
तो उसके जो पास में पेड़ पौधे लगे हैं वो, तो अराउंड, उसके आसपास, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन कौन है? अराउंड माई आई ड्राइव थॉट्स, बिकॉज या तो नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रीपोजिशन आती है। माई एक प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन का साथ रिलेशन बताती है दूसरे चीजों के साथ। वन क्राउडेड आवर ऑफ ग्लोरियस लाइफ इज वर्थ एन एज विदाउट एन एज। वन क्राउडेड आवर ऑफ ग्लोरियस लाइफ, जो एक क्राउडेड आवर है, इज वर्थ एन एज विदाउट एन एज, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन विदाउट यू। एक घंटा अगर वो पॉपुलरिटी का है तो वो घंटा पूरी लाइफ से वर्थ, ज्यादा कीमती है सर। किससे? पूरी लाइफ से ज्यादा कीमती है। कौन सा? वो घंटा। ओके। I tried to reason him out of his fears. I tried to reason him out of his fears. So out of his fears. Distinguish the prepositions from adverbs in the following sentence. Come down. Come where? तो come down. देखो come एक verb है और down क्या है? verb को qualify कर रही है, तो adverb हो गई है, तो क्या हो गई? come down. We sailed down the river. But the similar sentence, यहाँ पे sailed क्या है? verb है। down क्या है? ये एक एडवर्ब भी हो सकती है बट एक प्रीपोजिशन भी होती है, बट एडवर्ब इज नॉट जनरली फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। सेल डाउन द रिवर, रिवर क्या है? एक नाउन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। तो वेन एवर देर इज अ वर्ड दैट मे बी एन एडवर्ब और एन प्रीपोजिशन, देर इज अ कंफ्यूजन अराइज बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन if it is followed by the word is followed by an object, then this kind of the words is known as the preposition, not as adverb. Okay, so here the word down is preposition, but in the first word come down is adverb. तो भैया ध्यान रखना, फिर सेम वर्ड डाउन इज बिहेविंग इज एन एडवर्ब एज वेल एज प्रीपोजिशन। सो नेक्स्ट, द मैन वॉक्ड अराउंड द हाउस। तो मैन कहाँ चल रहा है? वॉक्ड अराउंड द हाउस, कहाँ पे? राउंड द हाउस। राउंड इज द प्रीपोजिशन, वॉक्ड इज द वर्ड, वॉक्ड इज a verb, round is the preposition because it's followed by an object named the house. He sat on his stool. On is a preposition. Why? Because in followed by an object. Whenever there would be a word that would be followed by an object, then it would not be an adverb, but it will behave as in the preposition. The carriage moved on. This time the preposition is at the last. The carriage moved on. Okay, but it's qualifying the verb, so it may be also termed as an adverb. The soldiers passed by. Passed is a verb and by. The soldiers passed by. Passed by what? So we are not getting the answer. So it's an adverb. The man turned round. So round is adverb because turned is a verb. We all went in. In is a adverb. He is in the room. Now it's a preposition. Now it's an preposition. He hid behind the door. वह कमरे के पीछे छुप गया. Behind is an preposition. Why? Because the door is an acting as an object. So there is a relation between the verb and noun. Because the door is a noun and hid is the verb. Because hid is the verb of hide, hid. And the third form of the verb is hidden. Hid, hide, hid, hidden. So I left him behind. मैंने उसको पीछे छोड़ दिया.
Next, said by the cottage door. Said by the cottage door. Yes, you have been given allotted the 5 minutes. You have to find the preposition. आपको 5 मिनट दिए जाते हैं और आपको प्रीपोजिशन फाइंड करनी है 5 सेंटेंस में. ओके, 2-3 मिनट बाद में मैं सबको डिस्कस करूंगा कि प्रीपोजिशन कौन सी है इनमें से. सो यू आर गिवन एटलीस्ट 2 or 3 minutes. You have your time. Find the preposition among the sentences. Okay. Let's discuss the sentence. I left him behind. Him is pronoun. Pronoun को अगर करे qualify, then चाहे उसके बाद में चाहे ऑब्जेक्ट आए कि नहीं आए, बट इट्स एन प्रीपोजिशन. क्या होता है ये प्रीपोजिशन? She sat by cottage door. By के बाद में beside भी यूज कर सकते हो. That is preposition. Why? Because the cottage door is an object pronoun. Is an object. Okay. The path leads through the woods. Woods क्या होता है? Forest. Woods का मतलब लकड़ियां नहीं है, फॉरेस्ट, जंगल को. देखो बता देता हूँ, इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना कि एक वर्ड होता है वुड. वुड मतलब लकड़ी. एक वर्ड होता है वुड्स मतलब लकड़ियां, बट दूसरा वुड्स होता है फॉरेस्ट. दूसरा वुड्स होता है फॉरेस्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज आई हैव रीड द बुक्स थ्रू. कि हम बुक्स को थ्रूली रीड करते हैं. आई हैव रीड द बुक्स थ्रू. बुक्स को थ्रूली रीड करते हैं. द स्टॉर्म इज रेजिंग थ्रू आउट. स्टॉर्म है वो रेजिंग कर रहा है, रेज कर रहा है. थ्रू आउट, थ्रू आउट रेज कर रहा है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम वाटर के बिना नहीं रह सकते. हम वाटर के बिना नहीं रह सकते. विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. अब देखो, कुछ यूज दे रखे हैं, कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनको आप क्या बना सकते हो, यूज कर सकते हो एज ए प्रीपोजिशन, एज वेल एज ए एडवर्ब टू. एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो. जैसे बिहाइंड, ही वॉज बिहाइंड मी. ऑब्जेक्ट है तो मतलब प्रीपोजिशन है. व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाई आर यू लुकिंग बिहाइंड. तो यहाँ लुकिंग वर्ब है, ये बिहाइंड वर्ब वर्ड आया है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों. दैट्स द रीजन कि हम यहाँ पे इसको क्या यूज करेंगे, एज एन एडवर्ब. देखो अब he was looking up in the sky. अब यहाँ पे क्या है, एज एन प्रीपोजिशन, because there is a word up in the sky, so it would be the preposition. But so he was looking up, so here it's an adverb because looking is a verb. He sat by the fire. The fire is an object here, so sat by. He was sitting by the, he was sitting by the tower clock.
It's also a preposition. ठीक है. What are you gauging by? क्या देख रहे हो उसके बगल में? That's a adverb. He was looking beyond the results. So here it's in beyond मतलब होता है पार. The eagle fly beyond the clouds. उसके पार, clouds के पार. तो जब भी उसके ऊपर होता है, then the word beyond is used. Under is also a preposition. He was sitting under the tree. वो ट्री के नीचे बैठा था. He was before you. वह तुम्हारे पहले आता है. He was sitting before. What are you looking? What are you watching before? He was looking after. What are you looking at? ठीक है. ऐसे हम preposition और adverb बना सकते हैं कि कई बार हमने देखा है कि we have seen that the object of the preposition ज्यादातर टाइम क्या होता है, either in noun or a pronoun. Sometimes, however, the object to a preposition is an adverb of time or place. कई बार preposition की जो object होता है हमेशा 90% of the time it's a noun or a pronoun, but sometimes there are exception, and here it will come as an object, and that is the time phrase or the adverbial phrase. Like I will be done by then. मैं तब तक then मतलब तब तब तक थक चुका होऊंगा, मैं तब तक थक चुका हूँ. Then it's known as I will be done by then. मैं तब तक थक चुका हूँ. Since then he has not shown his face. तब तक उसने क्या है, अपना फेस नहीं दिखाया. Come away from there. यहाँ से वो आ जाओ. Come away from there. तो यहाँ से आ जाओ. From there. He must have reached there by now. वह तब तक he must have reached there by now. अभी तक वो पहुंच चुका होगा. This time. How far is it from here? ये यहाँ से कितना दूर होगा. How far is it from here? कि यहाँ से कितना दूर होगा. It cannot last forever. So all are the preposition, but see, look at the object followed by this preposition. They are not now the noun or the pronoun. They are instead, they are the adverbial phrase of the time. How? That I will be done by then, by that time. Then is it not an object, neither it's a noun nor it's a pronoun, but what it is. It's an object. Since then, मतलब that time he has not shown his face. अभी तक उसने फेस नहीं दिखाया. Since then मतलब till that time. Came away from there. He came away from there. वहां से आ जाओ. वहां से आ जाओ. Come away from there. That place. Come away. From is the preposition, but there adverbial phrase, sir. That place. He must have reached by now. अब तक वो पहुंच गया. मतलब this time, the adverb of the time. He has reached now. He has reached there. How far is it from here? Here. यहाँ से कितना दूर है? This place is an adverb of the place. ठीक है? It cannot last forever. ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता है. Forever. Ever is the time. Ever is the time. Time period and the time. The adverb of the time is the ever. It cannot last forever. ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता है. So now move to the next. Sometimes the object to a preposition is an adverbial phrase. तो कई बार preposition एक adverbial phrase बन के आती. Each article was sold at over a pound. अब preposition कई बार phrase बन के आ रही है. देखो, at एक preposition है, but over a pound is also an adverbial phrase. एक rate है वो. So preposition is generally followed by an object, and that is adverbial phrase. The noise comes from across the river. So from is the preposition here, and across is also a preposition, but here it is not working as a preposition, but here actually it is acting as an adverbial phrase. Like from is a preposition, across is a preposition, but two prepositions can't be put together. So from is the preposition here,
but across, not acting as a preposition, but it's acting like that across the river. It's wholesome. It's a phrase. It's a phrase. And what kind of the phrase? Phrase, adverbial phrase. Why? Because across the river comes from the verb, qualifying the verb also. Okay? Qualifying the verbs comes. He was not promoted to the rank of the colonel till within a few months of his resignation. He was not promoted to is the preposition here. To the rank of the colonel till within a few months of his resignation. Means within a few. Within is a preposition. But a few months of his resignation, it's an adverbial phrase. Till is also a preposition. Within is also a preposition. But till is acting like a preposition. Till is telling us the time of the preposition. But within at the same time is telling us not the time of the preposition, but it's telling about the adverbial phrase. Why? Within a few months is an adverbial phrase of the time. So next, I sold my car for under its half cost. So for is the preposition, but under its half cost is an adverbial phrase. Adverbial phrase. And adverbial phrase of that quantity under its half cost. Half cost is quantity. I don't know the whether what was the cost, but I know one thing that how much it costed. Half of the money has been paid for that kind of the object he had sold. He swore from dawn till far into the night. He swore from dawn. Okay? कि कहाँ से? Dawn से till far into the night. Dawn and dusk. There are two words, my friends. First is dawn and dusk. Dawn मतलब सुबह का जो सूर्य की किरण होती है, सूर्य की किरण, उसको बोलते हैं. और डस्क मतलब गोधूली वेला, शाम की. So there is a difference between the dawn and the dusk. He swore from dawn till far into the night. मतलब क्या है वो काम कर रहा है. He's a labor. He's working from the day till night. And from तो यहाँ till क्या है? Till is a preposition. Into ये फिर preposition की तरह रख लिया. But this time this is not the preposition because two preposition too much close. It's not possible. It's near impossible. So into the night is acting as an object. He did not see her till a few days ago. Till a few days ago means telling the time. Okay, ago is also a preposition, but here it's not came as a preposition because preposition generally followed by an object, and here there's no following of an object, so we can term this not as an object but as an adverb. I was thinking about how to circumvent him. कि मैं ये सोच रहा था about or to circumvent him is adverbial phrase, while this about has come as preposition because because the adverbial phrase is acting as an object. Okay, as an object to the preposition, as an object to the preposition. Okay. Okay. Now move to the next part, and that is the preposition next chapter. A clause can also be an object to the preposition. कई बार clauses भी या clause भी. Clause का मतलब है कि different sentence with a different predicate with a different subject can also be. अभी तक clause मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, बट सिंपली ये ध्यान रखो कि सब्जेक्ट विद डिफरेंट प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट में दो चीज होती है सेंटेंस में, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को छोड़ के जो होता है दैट इज नोन एज ए प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मतलब
having the verb as well as object is known as predicate. A clause can also be an object to a preposition. Pay careful attention to what I'm going to say. Pay careful attention. To is what? Preposition. To what I'm going to say. This, ये sentence क्या एक अलग clause, क्या एक अलग subject, क्या एक अलग verb, क्या एक अलग object है कि नहीं? तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी कई बार प्रीपोजिशन करती है. जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करती है, देन द सेकंड सेंटेंस वुड बी फॉलोड एज एन ऑब्जेक्ट टू दैट काइंड ऑफ द प्रीपोजिशन. ओके, जैसे देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से. कोई भी मीनिंग नहीं है जो तुम कह रहे हो. इन इज द प्रीपोजिशन. इन इज द प्रीपोजिशन ब्रदर्स है. व्हाट यू से इज अ नेक्स्ट सेंटेंस, सो देयर इज नो मीनिंग. अब देखो, एक सेंटेंस को हटा दो, देयर इज नो मीनिंग इन, यहीं तक सीमित रखो, मतलब नहीं निकल रहा ना दोस्तों. तो मतलब तभी निकल रहा है जब जब इस सेंटेंस को पूरा करते हो. There is no meaning in what you say. Pay careful attention to what I'm going to say. The object to the preposition when it is a relative pronoun is sometimes omitted. जो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन को, वो कई बार रिलेटिव प्रोनाउन कई बार ओमिट किया जाता है. जैसे he is the man I was looking for. मतलब for whom I, man के बाद में क्या मिसिंग लग रहा है? whom. तो कोई बार ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो कई बार ओमिट कर दिया जाता है. जैसे कि he is the man whom I am looking for. क्या है ये? एक रिलेटिव प्रोनाउन है. These are the good rules to live by. ये these are the here which is it? These are the good rules which to live by. तो यहाँ पे which ऐसे लग रहा है मिसिंग है. एक्चुअली मिसिंग है नहीं, बट लगता है ऐसे मिसिंग है. क्योंकि प्रीपोजिशन काम में आ गई सीधी. यहाँ पे लास्ट में क्या है? फॉर. यहाँ पे लास्ट में क्या है? बाय. सो दे आर लाइक प्रीपोजिशन. द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन व्हेन इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन इज समटाइम्स ओमिटेड. जब कोई ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन को रिलेटिव प्रोनाउन बनना होता है तो उसको सीधा हटा ही देते हैं कि दिस इज द मैन whom I was looking for. These are the goods which these are the good rules which to live by. तो यहाँ पे विच आना चाहिए था, ऐसा लग रहा है बट लगाया नहीं. तो जब जब रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे लगे कि आना चाहिए प्रीपोजिशन के साथ में और फिर भी नहीं लगाए, देन इट मीन्स कि हमें जरूरी नहीं है. वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन को हम ओमिट कर सकते हैं. ओमिट का मतलब त्यागना, छोड़ना, भूलना. ठीक है, टू रेलेनकेस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रेलेनकेस. ओके, these kind of the nouns, these kind of the pronouns, these kind of the prepositions you have to take care in competitive examination. Okay, so let's move ahead that what is going on in the preposition. We will move to the some kind of the exercises along with the how the questions are asked in the examination and what is the nature of the examination of the IBPS, or even given state you can give the state level PCS exams too. Exercise. So there is an exercise. Now fill in the blanks with the suitable preposition. यहां से आपका रिफाइनमेंट होगा कि जो अभी तक आपने सीखा है दोस्तों, हम उसको पूरा करते हैं कि कहाँ पे क्या आता है, कहाँ पे क्या आता है. तो ये कुछ एक्सरसाइज में करवाऊंगा, कुछ तुम्हें घर से करनी है. नो प्रॉब्लम. इट विल रिफाइन योर नॉलेज, इट विल फिल्टर यू डे बाय डे. एट द डे you will complete the part of the speech, it will be more beneficial to you as well as your studies. Okay, so let's move to the that kind of the section. First, I give you 2-3 minutes that first you do five examples that contains of the preposition. Okay, so let having 2-3 minutes.
Now move to the answer sections. Let's discuss those answers from my side. Okay. The first example is the dog ran the road. Okay. So there is a filling the blanks that the dog ran the road. So suppose the option is like along, on, over, in, and across. Okay. And sometime fifth option is none of these. कुछ बार none of these भी रहेगा. दोस्तों, friends, let's discuss it back. The dog ran on the road. अगर on the road रहेगा तो डॉग कुत्ते को कुचल दिया जाएगा, पीछे से ट्रक मार देगा. So on the road तो कैसे होगा? अवर केवल उन्हीं चीजों के लिए काम में आता है जो ऊपर से जा रही है. ठीक है, छत से के ऊपर से निकल गया कोई. The aeroplane was flying over our head. ओके. इन जब उस चीज के अंदर चले, जैसे कि कोई अंदर बैठा हो कि ही इज इन द रूम, एनक्लोज सरफेस में हो, देन इट्स नोन एज इन. एलोंग, एलोंग मतलब साथ साथ चलना. कि सपोज कोई चीज साथ साथ चले, देन इट्स नोन एज एलोंग. अक्रॉस जब उसके क्रॉस चले. अक्रॉस द रोड भी नहीं आ सकती है अक्रॉस, जब वो इधर उधर भागे तो अक्रॉस भी आ सकता है, बट अदरवाइज इट वुड बी लाइक अलोंग द रोड. अगर वो रोड है उसके अलोंग चलेगा, देन ओनली इट वुड बी राइट. ओके. द रिवर फ्लोज, रिवर चल रही है. अब रिवर खुद सोचो प्रैक्टिकली क्या हो सकता है कि रिवर फ्लोज अबव द ब्रिज, ऊपर से चली जाएगी रिवर, ओवर द ब्रिज उसके हवा या आसमान छूते हुए जाएगी. ऑल आर इनकरेक्ट. सर द ओनली थिंग दैट इज राइट वुड बी अंडर द ब्रिज. क्या होगा? अंडर द ब्रिज. द राइट आंसर वुड बी अंडर द ब्रिज. क्या होगा? अंडर द ब्रिज. ब्रिज है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल दैट a river can flow above the bridge or over the bridge because it's a contactless motion. It's a contactless motion. Whenever there would be the contactless motion, then it would be the above and over. The work was done. So done by haste would be your answer, but it's wrong. What would be the right answer? The work was done. It will take the preposition in. The work was done in haste. वर्क क्या किया गया? जल्दीबाजी में किया गया. He is afraid of या afraid from the dogs. So some would say it would be the from the dog. Some would say it would be the of the dog. Let's change the word here. So suppose the preposition, these kind of the prepositions are known as the fixed kind of the prepositions. Let's change the word. It instead of afraid, it would be the frightened. Suppose that the word would be the frightened. So both will take the different kind of the preposition. Afraid will take the word of, and frightened will take the word from. So he's afraid of the dog. And if it would be the frightened, here the word would be used, he's frightened from the ghost. Ghost से उसको क्या लगता है? डर लगता है. I am fond of music. Fond is an adjective and it's nearly 100% of the time or always take the preposition, and that is of. He goes, if day is there, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So whenever the day is there, the preposition used would be, he goes on Sunday to the church. So for the place like temple, like mosque, it would be the to. To is used for the place, while the day will take the on. Okay? And year will take the preposition in. Like we say, no, in 1999, कि 1999 में, in 2004, 2004 में. Okay? He died his country. He died for his country. He died
फॉर हिज कंट्री, कंट्री के लिए मर गया सर। सो डाइड क्या लेती है प्रीपोजिशन? फॉर। डाइड ऑफ भी लेता है, डाइड फॉर भी लेता है। ऑफ कब लेगा? whenever my friends, it will take off only when there would be a kind of disease, like he died of cholera, he died of thirst, but he died for his country, वो अपने कंट्री के लिए मरा। The steam engine was invented. If someone is inventing something, then it would be like that. The steam was invented by the James Watt, by the James Watt. Okay, so it would be like that. The burglar jumped from the compound wall. Jumped from the compound wall. या jumped over the compound wall. अगर कूदा है उससे, then it would be from. अगर उससे उसके ऊपर कूदा है, then it's over. Jumped on, अगर उसके ऊपर अभी है. So the different preposition can be used in the similar sentence when our context is different. So this is known as how the context would be used. The village was destroyed by fire, नहीं, in fire. आग में जल गया था. by fire नहीं आएगा यहाँ पे, in fire आएगा. Because fire क्या करती है? विलेज को घेर लेती है. Okay, so the answer would be like that. Okay, so the next thing is that what is that to me? मेरे लिए उसमें क्या है? So for the meaning of giving that what is that to me, it cannot be done without an offense या with an offense, without offense. ठीक है, ये एक कानूनन जुर्म के या किसी को अपसेट करने के अलावा नहीं कर सकते. He spoke to me, वो मुझसे बात कर रहे थे इन उर्दू. किसमें? इन उर्दू. उर्दू के अंदर बात कर रहे थे. तो फॉर द लैंग्वेज एंड द पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड अस, we will use the word to. But for the language, the way of our talking, that I learned the vocab in French, means he's talking about the vocab. They live on the same roof, in the same roof, above the same roof, all are incorrect. Only the word used can be there, would be under the same roof. I have not seen him since Wednesday last. Since Wednesday last. मैंने उसको नहीं देखा है last Wednesday. I have known to him for a long time. Okay. So these would be the words that I have seen him for a long time. I have known him for a long time. The moon does not shine by its own light. Okay, अपनी ही लाइट से नहीं चमकता है. This is a matter of little importance. ये मैटर है little importance का. I am tired of walking. मैं walking से tired हूँ. He is not yet recovered from his tired from या tired from. I shall do it with pleasure. God is good to me. I will sit at my desk. I will sit at my desk to do my lesson. I am sorry for what I have done. Sorry for what I have done. So these kind of the preposition would be the preposition that would be followed by an object. So कल कुछ एक्सरसाइज और करेंगे. जब तक बने रहिए हमारे साथ. अगली क्लास से फिर जुड़िएगा. धन्यवाद.